तो सब कुछ so you have two level, E1 and E2. This can be rotational level or vibrational level. Okay, this gap is basically how much? Delta E. In quantum system, you will have some virtual state. So this state, let us take E1 gas and E2 gas. So this is actually your virtual state. Okay. So this virtual state is very short-lived. Its lifetime is around 10 to the power minus 40 seconds. Okay. The gap between E1 dash and E1, that gap is basically H nu 0, and that is actually the energy of your incoming beam. And the gap between E2 and E2 dash is same H nu 0. Okay. तो पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, E2 को छोड़ो अभी, है ना। जब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आपका virtual state है. In quantum system there always exists some virtual state, and that lifetime of this state is so very small, 10 to the power minus 40 seconds. The gap between E1 and E1 dash, this is matching with the energy of incoming beam. Then what will happen? The molecule staying here, it will jump to this level, right? अब यहाँ पे आ गया आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल यहाँ से कौन कौन से स्टेट में आ सकते हैं? सो आफ्टर विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, and that time is 10 to the power minus 40 seconds, this molecule will jump to, it can jump to E1 dash to E1, and it will produce what? Same energy as incoming beam, right? Or it has another possibility that it can jump from E1 dash to E2. And as I mentioned, this gap is how much? Delta E. So obviously the emitted photon will have how much energy now? H nu 0, total this minus this. Delta E. H nu 0 minus delta E, right? Is this clear? So this is actually your Raman line, and this is actually Stokes line, because that emitted photon will have less energy as compared to your incoming photon. So this is actually your Stokes line, right? Is this part clear? So wave number of Rayleigh line will be nu bar, that will be nu 0 bar, and for this wave number will be how much? Stokes line. So this is your energy. So if you divide by Hc, that will give you your wave number, right? So it will be nu 0 bar minus delta E Hc, and this is the delta E, right? सर Yes. यहाँ हमने ऐसा ही कंसिडर किया है ना कि दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये है कि रे है वो एच म्यू दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एच म्यू माइनस डेल्टा दे। हाँ, इनके पास जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो ये इस मॉलिक्यूल यहाँ पे भी जंप कर सकते हैं, यहाँ पे भी जंप कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, राइट? हाँ, लेकिन ये सर पॉसिबिलिटीज हुई ना, लेकिन हमें ऐसा नहीं होता है ना कि स्टोक लाइन मिलते है तब रेलेन लाइन नहीं मिलता। नहीं, दोनों ये मिलता है। दोनों हाँ दोनों मिलता है। ये तो If मतलब हम
देखो ये आप 3 लेवल की तरह समझो, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। आपने जो अपना लाइमान बामार पर्सन सीरीज पढ़े हो, तो फिर वहां पे क्या, सपोज आपके पास यहाँ पर 3 लेवल है, 3, 2, 1। आपका यहाँ पे एटम्स है, तो एटम्स 3 से 1 पे भी जंप कर सकता है, वो एक लाइन देगा। 3 से 2 पे भी जंप कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन रहे, राइट? इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन हियर? No. So same. So we'll get both. You may ask me why that virtual level is actually existing. So that's the actually interesting thing. So that is basically, that is basically coming from Heisenberg uncertainty principle. So according to Heisenberg uncertainty principle, in previous class also I told you during that vacuum fluctuation, if that photon has less energy, it can jump. But possibly that if there is a violation in energy delta E, that atom should come to ground state within this time. तो यहाँ से जब आपका atoms यहाँ पे jump कर रहा है, that's why it's a very short time because this energy violation is large here, but it can jump. This level it will exist, and that level existence of this level actually is coming from Heisenberg uncertainty principle, because quantum phenomena like Heisenberg uncertainty principle. So this atom can jump from here to here in this virtual state, but there is an energy violation, right? So atoms should come, there is a large amount of energy violation, so atoms should come within a very short time to its original position. But this level is existing, since there is existence of this level, so atom can jump from here to here also, from here to here also. When it is jumping from here to here, it will give you Rayleigh line. When it is jumping from here to here, it will give you Stokes line. But both possible are there, you will get both spectrum. Okay, so at least you learn how that Stokes line and Rayleigh line is coming. So these things actually your Raman shift or Raman displacement. Or you can say Raman displacement also. Now another possibility. Shall I erase this part? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. So another possibility you have, suppose you have same state E1 and E2, and there is this state here E1 dash, and you have E2 dash. Okay, so this gap is H nu dash. So when you are signing this photon H nu dash, sorry, H nu 0, then atom will jump from here to here, right? Atoms or molecules here, not atoms here molecules. So molecule will jump from E2 to E2 dash. Then when that molecule is here, it can jump from E2 dash to E2. That will produce a Rayleigh line, right? So this is your actually your Rayleigh line. It can also jump from E2 dash to E1. Sir, Yes. energy difference between E2 and E2 dash is H nu dot. H nu 0, and that is actually the energy of your incoming photon. And it is the difference between E2 and E2 dash. Exactly. Okay, sir. So in that scenario, what is happening, that molecule from E2, it will jump to E2 dash, and this level is very short-lived. So what will happen, that molecule from E2 dash, it will immediately jump to either E2. When it will jump to E2, it will give you Rayleigh line, because that energy is identical to your incident beam. But this molecule,
it can come from E2 dash to E1 also, right? This time it will have in a large energy. That will be how much basically? Since this gap I already have considered, that is how much I have considered. This gap is actually your delta E, right? So in that scenario, your energy will be H nu 0 plus delta E, and that is basically known as anti-supply. Okay, so its wave number will be, so just you have to, this is your energy. If you divide this energy by Hc, you will get wave number, right? So H will be cancelled, nu 0 by C, it will give you nu 0 bar and delta E by Hc. And what is actually delta E? Delta E proportional to omega E, when that level E1 and E2 actually your vibrational level, right? Because you know that energy separation between two levels is basically defined by vibrational constant for vibrational level, and delta E can be B also, right? B is your rotational constant. This is for rotational level. Is this part clear to all what I'm saying? Now the interesting part, why that intensity of Raman line is, sorry, Stokes line is large as compared to anti-Stokes line. So it is So obvious. due to population in Exactly. first level is high. So answer already given by Sauton. So you know that ground state is highly populated as compared to first excited state, right? And this is true for rotational and vibrational spectra. For both cases, the number of molecule or no molecules will like to stay at ground state, right? In fact, this is the natural rule. So what will happen? The molecule is here high here, so there will be large number of molecules that will pump from here to here. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे ज्यादा होगा, मतलब जब आप एनर्जी इंसिडेंट करोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इॉन से इॉन डैश में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, राइट? सो ट्रांजिशन फ्रॉम इॉन टू इॉन डैश इज लार्ज. तो इॉन डैश में जब चला जाएगा तो आपको इॉन डैश से E2 में भी आपको नंबर ऑफ ट्रांजिशन ज्यादा मिलेगा. एंड एक्चुअली इॉन डैश से E2 में ट्रांजिशन आपको क्या दे रहा है? Stokes line. Stokes line, right? So what I'm saying, since you have large number of molecule, intensity actually depends upon what? Number of molecule, right? So number of molecule ion पे ज्यादा है, तो obviously transition ion से ion dash में ज्यादा होगा as compared to E2 to E2 dash. So what I can say that number of ट्रांजिशन E2 डैश से हो रहा है ना, हमने दिखाया उसमें. exactly. देखो स्टोक्स लाइन के लिए कहाँ से हो रहा है? इॉन डैश टू E2, राइट? E1 dash to, हाँ yes. हाँ, इॉन डैश टू E2. तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपका इॉन डैश इॉन में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इॉन डैश में भी ज्यादा होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल कहाँ से जा रहा है? इॉन से इॉन डैश में जा रहा है, राइट? सो इफ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हियर, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इॉन डैश in ion dash will be large compared to E2 dash. Okay, so there will be large number of transition from ion dash to E2 as compared to E2 dash to ion, है ना? तो इसीलिए आपको क्या मिलेगा? स्टोक्स लाइन का इंटेंसिटी ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू एंटी स्टोक्स लाइन. इज दिस पार्ट क्लियर और आई हैव टू रिपीट? Sir, please. हाँ, रिपीट. हाँ yes. Sir, ट्रांजिशन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब इवन अच्छा, टू E2 डैश जा रहा है ना. रिपीटिंग. जब आपका इॉन डैश से E2 में ट्रांजिशन हो रहा है, कौन सा लाइन दे रहा है? Stokes line. हाँ, इॉन डैश से E2 में बाकी लोग बताओ कौन सा ट्रांजिशन दे रहा है? स्टोक्स लाइन. स्टोक्स लाइन. स्टोक्स लाइन का इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कितना है? E1 डैश स्टेट. E2 डैश से एंटी स्टोक्स लाइन कहाँ से मिलेगा?
E2 डैश से E2 डैश से E1 तो इसका इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? E2 डैश पे E2 डैश। ठीक, आपके पास इॉन में ज्यादा मॉलिक्यूल है या E2 में? E1 में Ion। तो जब पंपिंग होगा इॉन से, कहाँ पे पंपिंग हो रहा था आपका? इॉन डैश। तो समझ रहे हो ना, आपका पंपिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है? एक तो आपका इॉन से इॉन डैश पे हो रहा है और E2 से E2 डैश पे हो रहा है, राइट? हाँ यस सर। तो आपका अगर आपका इॉन डैश पे ज्यादा है तो नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, लेजर के टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। पॉपुलेशन। हाँ, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, यस सर। क्योंकि यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल कम है, ऑब्वियसली आपका यहाँ पे जंपिंग भी कम होगा। तो यहाँ पे अगर आपका मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका ये जो ट्रांजिशन है इॉन डैश टू E2 ये भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू E2 डैश टू इॉन। नाउ इज इट क्लियर? तो ट्रांजिशन ज्यादा हो रहा है मतलब आपका स्टोक लाइन का इंटेंसिटी ज्यादा है। इज दिस पार्ट क्लियर नाउ? इज दिस पार्ट क्लियर नाउ और आई हैव टू रिपीट मोर? यस सर। So again, I'm saying this state actually creating due to Heisenberg uncertainty principle. So let me let me tell something. जैसे आपका दो लेवल है, सपोज मान लो E2 और इॉन है, ठीक है? इनके गैप में, इनके बीच में गैप मान लो आपके पास 10 eV है, ठीक है? आप एक फोटोन को साइन किए हो जिसका एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है यहाँ जंप नहीं कर सकते, राइट? बट इट कैन जंप। सो क्या होगा, यहाँ से आपका मॉलिक्यूल 5 ही ऑब्जर्व करके यहाँ पे स्टेट है जो वर्चुअल स्टेट है यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं रह सकता है, क्योंकि डेल्टा ई वायलेशन एनर्जी का वायलेशन कितना हो रहा है? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू एच क्रॉस। तो विद इन डेल्टा टी इट कैन जंप टू इॉन लेवल। सपोज मान लो यहाँ पे कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे है अभी मॉलिक्यूल आपका। तो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इट कैन जंप फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सपोज मान लो एक दूसरा फोटोन आ रहा है, तो उस फोटोन को एब्जॉर्ब करके भी वो यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, अगर विद इन डेल्टा टी अगर दूसरा फोटोन आ गया तो ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल का एनर्जी कम है ये जंप नहीं कर सकता है, कर सकता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। ओके, so in quantum physics you will always have some virtual state, and that lifetime is very small because there is a huge amount of violation in energy. So obviously from Heisenberg uncertainty principle, delta E into delta T equals to H cross, delta T will be very small. That's why you got that lifetime of your virtual state in Raman scattering, that is 10 to the power minus 40. Okay, सर एनी टाइप ऑफ एनर्जी का वर्चुअल स्टेट है? sorry, सर एनी टाइप ऑफ एनर्जी का वर्चुअल स्टेट है? yes, I think so, certain. ओके Yes. फोटोन आपका इंटरेस्ट किस में है रिसर्च में? सर अभी तक नहीं, ठीक है, एस्ट्रो पे पूरा है। एक्चुअली अभी न्यूक्लियर एस्ट्रो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत चल रहा है, न्यूक्लियर का तो डाउन चल रहा है, तो न्यूक्लियर एस्ट्रो दोनों मिला के काम चलता है। चलो नेक्स्ट, so shall I proceed? Rotational Raman spectra. So there are two kind of Raman spectra, you know. So one is rotational Raman spectra, है ना? यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है। एक आपका वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल डिस्कस रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा।
So the mechanism where I told you now, told you for quantum phenomena, same thing is happening in rotational level also. I'm not going in detail, but for rotational Raman spectra, so you will have energy. So that selection rule, let me write first. So delta J equals to 0 plus minus 2. So 0 is for your what? 0 is for Stokes Rayleigh line. Yes. Okay. And plus 2 is for? Anti-Stokes. Plus 2 is for what? Anti-Stokes. Anti-Stokes or Stokes? Stokes, right? Because you see, it is there are two level I have considered. So atoms in the ground state is going to ion dash, and when it is coming to here, so this is actually what is happening. Listen to me, what I am saying. I am not drawing it again, but I am giving you hints. So एंटी-स्टोक कब स्टोक्स कब प्रोड्यूस हो रहा था? ये आपका लोअर लेवल है, आपका हायर लेवल है. यहाँ से मॉलिक्यूल का जंप यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से जब यहाँ आ रहा है तो आपका स्टोक्स लाइन प्रोड्यूस हो रहा है. तो एक्चुअली जंपिंग कहाँ से कहाँ हो रहा है? यहाँ से यहाँ हो रहा है, लोअर टू हायर, राइट? Yes, sir. Yes. So for two plus 2 actually for your Stokes line. Okay, -2 is for anti-Stokes line. ये क्लियर हुआ है? किसी का कोई डाउट है इसमें? Is there any doubt? Is there any doubt? So this is just a selection rule. Now I'll see that position of Raman line. I will see that position of Raman line nu dash, that will be nu 0 bar. Nu 0 bar is actually the position of your Rayleigh line. Then you will have plus minus b j dash plus j dash plus 1. This is the higher state rotational quantum number. Okay. Minus b j double dash plus 1. Okay. So I am using plus minus, because plus corresponds to Stokes line, because nu 0 bar is the Rayleigh line. So plus will give you some number that will be to rightwards of your Stokes line, sorry, Rayleigh line. So plus sign actually is for anti-Stokes line, and minus is for Stokes line. माइनस में क्या मिलेगा आपको? जो आपका न्यू 0 बार था लेफ्ट में मिलेगा ना. तो यहाँ पे Yes. प्लस का मतलब स्टोक लाइन, सॉरी एंटी स्टोक लाइन का है, माइनस का मतलब स्टोक लाइन. ठीक है, अब सिलेक्शन रूल लगाओ. डेल्टा जे इक्वल्स टू +2. ठीक है, +2 के लिए करोगे तो प्लस माइनस आपको क्या देगा? वो स्टोक्स लाइन एंटी स्टोक्स लाइन का पोजीशन बता देगा. तो डेल्टा जे एक्चुअली व्हाट? डेल्टा जे डैश माइनस j double dash, that is 2. It means j dash equals to how much? 2 plus j double dash. And now substitute it here. ये substitute करो यहाँ. So आपको मिलेगा new bar, that will be new 0 bar plus minus d will be common. तो यहाँ पे अगर j dash की जगह पे substitute करोगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? j double dash plus 2, j double dash plus 3 minus j double dash plus 1. Okay. Separately you can check for anti Stokes line, anti Stokes line separately भी check कर सकते हो. मैंने separately नहीं check किया, प्लस माइनस ले लिया. ठीक है, you can take that selection rule delta j plus 2 minus 2 and you can check also. ये कितना आ रहा है? b j double dash square plus 5j double dash plus 6 minus j double dash square minus j double dash. This will be cancelled, so you will get
nu 0 bar plus minus how much you are getting? So 4j double dash, right, plus 6. So if you take 4 common, so it will be 4b j double dash plus 3 by 2. Okay. तो आपका अगर सपोज मान लो 0 से कहाँ पॉसिबल हो सकता है ट्रांजिशन? 0 से कहाँ हो सकता है शॉर्टन? कैन यू प्लीज टेल मी वेयर कैन वी गो? सर जीरो रोटेशनल ना, हाँ 0 जीरो to प्लस माइनस 1। नहीं, सिलेक्शन रूल अब तो चेंज हो गया ना, प्लस माइनस 2 आ गया, तो ओ 0 ओ इट कैन गो टू हेयर और इट कैन कम फ्रॉम हेयर टू 2 to 0, राइट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 0 to 2 इसमें आपका सिलेक्शन रूल क्या होगा? डेल्टा जे प्लस 2। अगर 2 से 0 पे आ रहा है डेल्टा जे कितना है आपका? -2, माइनस। राइट? ओके, so that's why I have written plus minus. ओके, तो 0 से 2 जा रहा है मतलब क्या है आपका? बेसिकली स्टोक्स लाइन देगा, राइट? और 2 से आपका 0 पे आ रहा है तो उसका मतलब आपको क्या मिलेगा? एंटी स्टोक लाइन। तो इस केस में आपका जो न्यू बार हो जाएगा, कितना हो जाएगा? न्यू 0 बार, अब जेड एस की जगह पे कितना लिखोगे आप? जेड डबल एस की 2 जगह पे 0 0 लिखूंगा स्टोक्स लाइन के लिए, एंड एग्जैक्टली जब 0 लिखूंगा तो फिर क्या मिलेगा आपको? स्टोक्स लाइन मिलेगा। वही साइन क्या मिलेगा आपको? माइनस मिलेगा। समझने की कोशिश करो, ये जो साइन है माइनस साइन किसके लिए है? स्टोक्स स्टोक लाइन के लिए, प्लस साइन किसके लिए है? एंटी स्टोक लाइन। बट मैं हमेशा किसका क्वांटम नंबर लिखूंगा यहाँ पे? लोअर का। तो प्लस माइनस आपको डिसाइड कर देगा कि आपका स्टोक से एंटी स्टोक से, और जो जे डबल डैश है आपका लोअर स्टेट का क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे ट्रांजिशन में जो लो वैल्यू है उसको यूज करूंगा। तो यहाँ पे लिखो कितना हो रहा है, देखो 4b, और ये कितना आ रहा है आपका? इंटू 3/2, राइट? तो बेसिकली आपका कितना आएगा? 6b आएगा, राइट? 4b इंटू 3/2 6b। जब ऑन से आपका 3 में ट्रांजिशन हो रहा है या 3 से ऑन में, तो फिर कितना हो जाएगा आपका? ये न्यू 0 बार प्लस माइनस, बताओ आप यहाँ पे कितना लिखूंगा? 1, राइट? यस सर 1। So it will be plus minus 10, right? 10b. Yes. Next 2 to 4 4 or 4 to 2. So new bar will be how much now? New 0 bar plus minus 14. Okay, so this is the scenario. सर Yes. मतलब फर्स्ट केस है ना हमारी 0 to 2, उसमें से म्यू 0 बार प्लस 6b ये एंटी स्टॉक लाइन होगी ना, हाँ, yes. और म्यू 0 बार माइनस 6b स्टॉक लाइन होगी। Stroke line, yes. थैंक यू सर। Okay. Now shall I draw? So this is the wave number. Now I'll draw the Stokes and anti-Stokes line. ये क्लियर हो आप लोगों को? यस सर। तो आपका ये लेवल है 0, j इक्वल्स टू 0 1 2 3, ओके? तो 0 से आपका 2, excuse me. So here you have, first you have Rayleigh line, right? That is highly intense. This is your Rayleigh line. तो जब 0 से 2 हो रहा है
तो फिर कौन सा मिलेगा आपको? इस साइड नहीं, उल्टा हो गया। जब 2 से 0 लाइन होगा, मिलेगा। 2 से 0, तो फिर आपको कौन सा मिलेगा? फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन मिलेगा, राइट? एंटी स्टोक लाइन। So that separation is how much? 6b. From that rally line, that separation is how much? 6b. 6. नेक्स्ट आपका कहां से मिलेगा? 3 से 1 में, राइट? 3 से 1 में मिलेगा कहां पे? सेंटर से 10b, राइट? सेंटर से 10b मतलब फर्स्ट एंटी स्टोक और सेकेंड एंटी स्टोक के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4b. बिकॉज रैले से उसका डिस्टेंस कितना है? 10b. रैले से फर्स्ट का डिस्टेंस कितना है? 6b. तो obviously this distance will be how much? 4b, right? Similarly, if you check third line, the separation between third line and second line will be how much? 4b. तो रेलर लाइन से फर्स्ट एंटी स्टोक्स का डिस्टेंस 6b है। बाकी जो आपका दो लेवल है, दो एंटी स्टोक लेवल है, उनके बीच में हमेशा कितना डिस्टेंस है? 4b करके है। आई एम अगेन रिपीटिंग, रेलर लाइन से फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन का जो डिस्टेंस है वो 6b है। उसके बाद कोई भी लाइन लो, मतलब सेकेंड लाइन, सेकेंड एंटी स्टोक लाइन एंड फर्स्ट एंटी स्टोक लाइन, इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा? 4b होगा। थर्ड एंड सेकेंड, इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा? 4b होगा। फोर्थ एंड थर्ड 4b, दे आर इक्वली स्पेस्ड, बट फर्स्ट लाइन, distance between first line and rally line, that will be 6b. Okay, similarly sorry, this is all about anti-stroke line, right? I'm again showing this stroke line. So this is all about your anti-stroke line. Now stroke line from 0 to 2, right? So that frequency wave number is here. This separation again how much? 6b. The separation between rally line and first stroke line, that separation will be 6b. And 1 to 3, so you will have second stroke line. The separation between second stroke line and first stroke line, that is how much? 4b. 4. Separation between third stroke line and second stroke line, again it will be 4b. So first line से फर्स्ट रैले से फर्स्ट एंटी स्ट्रोक का सेपरेशन 6b है, रैले से फर्स्ट स्ट्रोक लाइन का सेपरेशन 6b है। तो फर्स्ट एंटी स्ट्रोक एंड स्ट्रोक लाइन का सेपरेशन कितना है? 12b, राइट? 12b। हाँ, ये पूछा था एक बार आपका नेट में 5 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है? Okay, now let me do 2 problems, then we will go to vibrational. ये क्लियर है आप लोगों का? सर स्टोक्स लाइंस का इंटेंसिटी ज्यादा होता है ना? हाँ, इंटेंसिटी ज्यादा होता है। यहाँ पे इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिखा ही नहीं था। आपको पता है ना रोटेशनल का इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बट यस, दिस विल हैव हाई इंटेंसिटी एज कंपेयर टू एंटी स्ट्रोक लाइन। Okay, now suppose the wavelength of stroke line is given, that is 54 problem. This is problem, okay? 5400 Armstrong, and wavelength of rally line is given, that is 5340 Armstrong. आपको कैलकुलेट क्या करना है? wavelength of anti-stroke line is how much? Can you able to calculate? Yes, sir. Yes. आप लोग क्लास टाइमिंग कितना है? कितने बजे तक?
Sir, 830. 830. Okay. Okay, then let me proceed because very short time I have to do one more problem. So it's a very simple problem because I already have told you that 2 by lambda 0 equals to how much? 1 by lambda s plus 1 by lambda s, right? So it means lambda 1 by lambda s will be how much? 2 by lambda 0 minus 1 by lambda s. So lambda s will be how much? It will be lambda 0 lambda s divided by twice lambda s minus lambda 0. So lambda s, if you calculate, it will be 5400 into 5340 divided by 2 times 5400 minus 5340. So if you calculate it, you will get 5.281 into 10 raised to 3. yes. So it will be how much? 5.281 into 10 raised to 3. So 5 to 81, right? In Armstrong. Yes. Yes. Okay. Next problem is, so they have given that Raman shift delta nu they have provided you for O2 molecule. O2 molecule Raman shift is given, that is plus minus 52J plus 78. Okay, and reduced mass is given, that is 13.36 into 10 to the power minus 24 gram. So what you have to calculate? So they have provided a Raman shift of O2 molecule and reduced mass also. So you have to calculate that rotational constant B. Rotational constant you have to calculate. Then you have to calculate moment of inertia, and also you have to calculate bond length. Okay. So it's a very simple problem because you know Raman shift, that was how much? Plus minus 4b j plus 3 by 2, right? That is your form, right? I think. Yes. Okay. Now if I compare, so I'll make the form inside, that will be in the form of j plus 3 by 2. So how? So you have to take 52 common. If you take 52 common, so what I can write from this equation? From this equation, what I can write? Plus minus 52 equals to into j plus, how much it is given? 78. So what will be the factor? 3 by 2, right? Can I write like this? So 52 के साथ इसका multiply करो, 78 मिल जाएगा. So if you take 52 common from this equation, you will get like this. Now 52 is actually how much? 4v. And of course this unit they have provided you in centimeter inverse. Did you get what I'm saying? So this is your actual form. So if you take 52 common, so this is the form. So I can compare now, right? After taking 52 common, so now it is easily comparable. So what I can write? 4v equals to 52. No? Is this part clear to all? Please respond me. Yes, sir. Okay, now can you calculate how much b will be? 30. 13 centimeter inverse. And b is actually how much? So it is actually h by 8 pi square IC, right? So you have already calculated b, so you can calculate I also. So I will be how much? 6.63 into 24 in CGS unit, it will be minus 27. Because divide by 8 pi square. Okay, and this is b is how much? 13 centimeter inverse.
And to cancel this centimeter inverse, you have to write C in CGS units. So it will be 3 into 10 to the power 10. Because here you will have centimeter, this will cancel this unit, right? So basically, I have written everything in CGS unit. So if you calculate it, you will get 2.1 into 10 to the power minus 40 sorry cm square. सर 13 का वो फैक्टर कौन सा? लिखना है 13.36 into 10 raised to minus 24 है ना, 24 का फैक्टर नीचे आएगा ना, म्यू की वैल्यू नहीं म्यू ये वाला। हाँ 13. हाँ ये वाला ये क्या होता है आपका? सॉरी नेक्स्ट पार्ट में यूज होगा, उसीलिए दिया है अभी। ओके, so you have calculated I, now you can calculate bond length, right? Because I equals to how much? Mu r naught square, and r naught is actually bond length, so r naught will be how much? I by mu. Okay, so if you substitute it now, so I is basically how much? I have calculated, you just substitute it here, 2.1 into 10 to the power minus 40 divide by what? 13.36 36 into 10 to the power minus 24. minus 24. Okay, calculate it. I have calculated, you check it. So I got 3.9 10 to the power minus 9, right? Centimeter. 3.9 into 10 to the power minus 9 centimeter. Okay. Okay. Another thing I forgot to tell you. Is this part clear? So I'm forgot to mention that ratio. That thing is also important. So ratio of intensity of anti-Stoke line to that of Stoke line will be how much? It will be depend upon what factor? Sir, 1 sir. No, these things exponential minus E by so delta E. E2 minus E1 by KT. So these Okay. things also can be important for your exam. Okay, I am expecting. So E2 and E1, you know, this is maybe rotational level or vibrational level. Okay, so this is all about the Raman spectra, but tomorrow I'll discuss little bit. And I'm expecting tomorrow I'll finish. What of the things are left, I'll compact it, then I'll finish. But the question you will get from net, whatever I have discussed till now, from here itself you will get. Okay, so Okay. I should stop here. और सर यहाँ degeneracy तो नहीं consider होगा. Degeneracy, yes, you may consider, but what I am interesting, yes, here you can consider also, because you know that number of population that depend. But I'm mainly interesting on this part, temperature. They may ask this thing, okay? Okay. How that Okay. it is related to temperature or these things, okay? So also, of course, you can introduce some degeneracy factor also here, okay? But these things, this pattern, they may ask. Mainly temperature. बट सर डीएनएस तो एक ही होगी सर. Yeah, degeneracy, yes. Degeneracy. क्योंकि E2 माइनस E1 तो सर एक ही के लिए होगा ना. Degeneracy. Yes, वो तो पर्टिकुलर के लिए. But what I'm saying, this thing, you know, how that it depends upon temperature. यस सर. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इसका इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा. ठीक है. So tomorrow we'll finish, okay? सर कल कितनी क्लासेस चलेगी? एक ही क्लास चलेगा कल. सुबह भी होगी सर क्लास? सुबह तो मेरा नहीं होता है. ओके सर. ओके, ठीक है. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you sir.